Hey guys, welcome to the Domichef Travels, where we take you on a journey to some exciting places. So, this series will be about our 10 days journey to Dubai, where we cover all the major tourist spots and places of interest. In this episode, we are covering day 1 and 2 in Dubai, where we check into our hotel and visit some nearby places like Gurudwara, Ibn Batuta Mall, and Outlet Mall. So hop on and enjoy the show. हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं होटल आइबिस अलबर्शा। ये साउथ दुबई में लोकेटेड एक बजट फ्रेंडली होटल है एंड हमने हमारा ट्रिप ऐसे प्लान किया था कि 5 डेज़ हम साउथ दुबई में हैं और 5 डेज़ के लिए हम लोगों ने नॉर्थ दुबई में प्लान किया है। सो चलिए देखते हैं अंदर से होटल कैसे हैं। सी यू। सो एंटर करते ही सामने है चिल कैफ़े, जहाँ पे अच्छी कॉफ़ी मिलती है। ये इनका रिसेप्शन एरिया है, जहाँ से आप चेक इन करके अपने रूम्स की तरफ जा सकते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर राइट, यहाँ पे है इनका वेटिंग एरिया एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। As we go further, on your right is Jambori restaurant, where we have foosball, TT table and also a snooker table. So now, after seeing this, we'll go to our room and I'll show you how our rooms look like. As we are entering the room, we can see that the room is uniquely designed. Though it is small in size but aesthetically appealing, and हमें ये रूम 5000 में मिला है जिस टाइम हम गए थे, but as you know that the price may vary from season to season. Bathroom piece compacted. So for the rest of the day, we decided just roam around Dubai and see its amazing skyline and beautiful buildings. Next we went to the Mall of Emirates and clicked some nice pictures with some unique backgrounds. And we had to call it a day as we were really tired. So see you tomorrow. तो फाइनली हम निकल चुके हैं डे 2। हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के बाद जाएंगे हम इबन बतूता मॉल और उसके बाद जाएंगे फाइनली आउटलेट मॉल। गुरुद्वारा यहाँ का बहुत ही हिस्टोरिकल है। इनके पास 3 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं एंड मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, बट बाहर से डेफिनेटली आई शो सम पिक्चर्स एंड आपको हो सके तो रिकॉर्ड्स भी दिखाऊँगा। चलिए, और ये भी है साथ में। चलिए, हाय। सो हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा गुरुद्वारा। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम यहीं से दिखा देंगे आपको। मैं कुछ फ़ोटो शेयर कर दूँगा। चलिए मिलते हैं गुरुद्वारे के। जैसे कि मैंने बताया था, इस गुरुद्वारे के पास काफ़ी सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ट्रॉफीज़ एंड सर्टिफिकेट्स हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है एंड बहुत ही सुंदर है। हाँ, तो हम अपने गुरुद्वारा होकर आ चुके हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुल है और वहाँ से हमें प्रसाद भी ऐसे मिला है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इबन बतूता मॉल। सो आफ्टर गुरुद्वारा, नाउ वी आर गोइंग टू इबन बतूता मॉल through the Ibn Batuta gate.
This is one of the largest malls in Dubai and has almost all the stores you'll ever need for your daily and expensive shopping needs. So, let's visit this beautiful mall and enjoy. फ्रेंड्स, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पीछे इब्न बतूता मॉल है, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा अंदर और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या ब्रांड्स हैं और क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं। एंड फॉर दोस्त जिनको नहीं पता कि इब्न बतूता मॉल क्या है, तो दिस मॉल इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रैवलर जिनके नाम पर ये मॉल है। चलिए देखते हैं क्या है। As you can see, now we're inside the mall and हमारे बिल्कुल बैक साइड में फाउंटेन है, as you can see. Also, this mall is beautifully architectured. इसकी walls बहुत ही beautiful हैं. Let's check out. मॉल में हम जब घूम रहे हैं आप देख सकते हैं कितनी मतलब प्यारी कह सकते हो बिल्डिंग लुक्स दी हुई हैं एंड आपको फील ही नहीं होता कि आप इस मॉल में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कह सकते हो कि आप यू ट्रैवल बैक इन टाइम। एंड ये देखिए ऐसा लग रहा है आप किसी बहुत ही पुराने अलादीन के ज़माने में आप पहुंच चुके हैं और वहाँ के आर्किटेक्चर के बिल्डिंग्स में आप घूम रहे हैं। इजिप्ट कोर्ट से बाहर आ गए हैं, तो अभी हम थोड़ा कुछ खाने के लिए जा रहे हैं बिकॉज इनको भूख लग रही है। And this is the grand food court where you will see a wide variety of shops and restaurants that you normally don't find in India. So we decided to try something new and went with Filipino food from Sushi Your Way and Tapaking. So we decided to have chicken lumpia with rice and a normal sushi roll, which was absolutely delicious. And इन सब को देख के भी टेम्पटेशन तो बहुत हुई कि कुछ ना कुछ स्वीट तो ले ही लें, बट फाइनली किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया एंड वी वॉकड अवे। And after having a delicious meal, we decided to resume our journey and explore this mall further. So we are now heading towards the last part of this mall, the China Court. As you can see, it was differently designed in Chinese architecture. We also saw Charlie Chaplin. And yes, they have a full-size ship inside the mall with a big multiplex. And now I'm sharing some photographs we took in the mall and I hope you like them. इब्न बतूता मॉल से और अब हम जा रहे हैं आउटलेट मॉल। आउटलेट मॉल की खासियत ये है कि वहाँ पे हमेशा सारा टाइम सेल लगती रहती है। आप सीज़न में जाएं ऑफ सीज़न में जाएं डजेंट मैटर, वहाँ पे हमेशा ही आपकी अच्छे प्राइसेस मिलेंगे और डील्स मिलते रहेंगे। ब्रांड्स सारे हैं बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे वही है कि दूर बहुत है। इट्स शोइंग अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वेयर वी वर,
सो चलो एटलीस्ट हम उतनी शॉपिंग कर लेंगे वो वर्थवाइल हो जाए. And now I'm taking you to my favorite store, Comic Cave, where you can see almost all the DC and Marvel figurines in different poses and styles. And I can literally spend the whole day in this store. And this store alone made the entire journey to this mall worthwhile. So after spending 2 to 3 hours in this mall and spending a fortune, we decided to head back home and save our energy for the next day, which is going to be even more fun and exciting. So see you tomorrow.